So today we're going to discuss a very important event that's scheduled in near future. Now I'm not talking about the COVID-19 vaccine yet. I'm talking about the general elections that are going to happen in the United States of America. So as you know that the elections in the United States of America happen every 4 years. So after 2016, 2020 is the year जहाँ पे elections होने वाले हैं. And this is the 59th time that these presidential elections are happening in the United States of America. And the elections started in 1789. Okay, so in 1789, the Constitution of the United States of America came into being. It was basically enforced. उसके बाद से elections होने लग गए. This is the 59th time. So in this session, we'll understand a bit of background story about the elections. We'll understand as to how these elections take place, who all are eligible to fight in the election or to contest in this election. What are the differences between the Indian elections and the United States elections, because we know that both of these countries are democratic countries. Then how are their election systems so different? And then we'll discuss some facts about the elections of 2020, the United States elections of 2020. So India and the United States of America are both democratic countries, right? But the way these countries conduct elections are very different. The head of the government in India is called the Prime Minister, whereas the head of the government in the United States of America is called the President. उसके अलावा भी इंडिया हैज़ नो बार ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर. जब तक वो इलेक्ट होता रहेगा, जब तक उसको पार्टी के जो बाकी मेंबर्स हैं, जो बाकी सीनियर मेंबर्स हैं, वो बैक करेंगे एज द प्राइम मिनिस्टर, दैट पर्सन विल कीप ऑन बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर. Our first prime minister, Pandit Jawaharlal Nehru, was India's prime minister for about 17 years. Our first president, Dr. Rajendra Prasad, was India's president for more than 12 years. Okay, so that is how it works in India. There is no limit. Whereas in the United States of America, you cannot be the country's president for more than 2 terms. और वहाँ पे एक टर्म 4 साल की होती है, which means you cannot be United States president for more than 8 years. Okay. Now let's understand as to what is the eligibility criteria to stand or contest in the elections in the United States of America. The first criteria is that the person who is contesting the election has to be minimum 35 years old. The second condition is that the person who is contesting the election should be the natural born citizen of the United States of America. Natural born citizen का क्या मतलब होता है? That person who is contesting the election या तो वो अमेरिका में बॉर्न हुआ हो, दैट पर्सन वॉज बॉर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड इफ दैट पर्सन इज बॉर्न इन सम अदर कंट्री, देन एटलीस्ट वन पेरेंट, ईदर हिज फादर और हर फादर और मदर, शैल बी दिस नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तभी वो नेचुरल बॉर्न सिटीजन होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अदर देन दैट, द थर्ड कंडीशन इज दैट द पर्सन हु इज कंटेस्टिंग द इलेक्शन shall be the resident of the United States of America for a period of 14 years. Okay, so these are 3 important conditions. अगर ये इसमें से एक भी condition कोई meet नहीं करता, then that person is not eligible. इंडिया में क्या होता है, the president even if he is naturalized, basically he is born in some other country, उस country का वो citizen होता है, but वो उस country की citizenship give up करके and that person comes to India and India gives that person the citizenship of our country, then also that person is eligible to become the president. United States में ऐसा नहीं है, वहाँ पे the person has to be natural born citizen. Now let's understand as to what are the different election systems in India and in the US. So in the United States of America, you won't believe that the election process goes on for at least a year. Okay, करीब 1 साल तक election process चलता रहता है, and there are 5 major election points. So we could say 5 important steps that happens in the election in the United States of America. The first step is the primaries and caucuses. Primaries और caucuses का क्या मतलब होता है? It means that जो particular states होते हैं, वो उन parties, जो state की parties होती है, वो खुद अपने state में elections करती है to decide कि उस state में से कौन उनका candidate होगा who will stand for the presidential election. ठीक है? So 34 states in the United States of America. We know that there are total 50 states in the USA. उसमें से 34 states conduct primaries और 16 states conduct caucuses. Caucuses का ये मतलब होता है that again a certain region or certain villages or towns, they conduct their own elections among their party members, जो कि फाइनली डिसाइड करते हैं कि कौन उनका कैंडिडेट होगा. सो ऐसे 50 स्टेट्स होते हैं, 34 प्राइमरीज एंड 16 कॉकसेस. उसके बाद में दी सेकंड स्टेप इज द नेशनल कन्वेंशन ऑफ पार्टीज. नेशनल कन्वेंशन ऑफ पार्टीज में क्या होता है, द पर्सन who is going to be the candidate or the presidential candidate from a particular party
is elected और इनफॉर्मली डिक्लेयर्ड ऑल्सो, ठीक है, वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, बेसिकली पब्लिकली बताया जाता है कि हमारी पार्टी से कौन इलेक्टेड होगा, और जो भी मेंबर्स ऐसे कॉकसेस और प्राइमरीज के थ्रू इलेक्ट होकर आए होते हैं, दे फाइनली डिसाइड कि कौन पार्टी में से कौन बनेगा, ओके, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। और जो फाइनली प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है ना हर पार्टी से, दैट पर्सन इलेक्ट्स और दैट पर्सन डिसाइड्स कि कौन वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा। सो इंडिया में हमने बहुत बार ये सुना है कि सरकार गिर जाती है बिकॉज द सरकार, द गवर्नमेंट लूजेस द मेजॉरिटी। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स एंड दैट डज नॉट हैपन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पर व्हेन वंस द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड, दैट गवर्नमेंट स्टेज इन पावर फॉर 4 years, और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, दैट पर्सन बिकम्स द प्रेसिडेंट इन केस जो प्रेसिडेंट एक्चुअली बना हुआ है, दैट पर्सन डाइज इन ऑफिस ड्यूरिंग हिज ऑफिस, ओके। तो अगर वो 4 सालों में उनकी डेथ हो जाती है किसी वजह से, देन द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर। दैट इज व्हाई वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ द थर्ड पार्ट, ओके, द थर्ड स्टेप इन द यूनाइटेड स्टेट इलेक्शन इज द नेशनल कैंपेनिंग। नेशनल लेवल कैंपेनिंग होती है वंस द पार्टी कैंडिडेट इज इलेक्टेड, दैट कैंडिडेट अलॉन्ग विद द वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट गोज थ्रू एंटायर कंट्री, ठीक है, वो पूरी कंट्री में जाते हैं, दे शेयर देयर आइडियाज, देयर प्लान्स, और बेसिकली वो बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो जनरली रैलीज कहते हैं इंडिया में जो होती है, कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं अपनी अपनी पार्टीज के, वो करते हैं, एंड दैट गोज ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। Now the next step और the fourth step are the general elections, ठीक है, कैंपेनिंग हो गई, अब जनरल इलेक्शंस होते हैं which is going to happen in November। और यूनाइटेड स्टेट्स में हर 4 साल बाद नवंबर में ही इलेक्शंस होते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे। और ये कौन सा पर्टिकुलर डे? दिस इज द फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे। इसका क्या मतलब होता है? इट्स जनरली द फर्स्ट ट्यूसडे, बट अगर 1 नवंबर विच इज द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर अगर वही ट्यूसडे है, then it won't happen on 1st November, okay? So it's basically the first Tuesday after the first Monday, तभी elections होते हैं United States of America में, okay? So this time also the same is going to happen in the United States of America. So general elections होते हैं, but presidential elections जो होते हैं ना, उसमें directly elect नहीं करते लोग president को, okay? So you do not directly vote for a president in the United States of America, you vote for certain people called electors. इलेक्टर्स का क्या मतलब होता है? हर स्टेट में से बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन जनरली कुछ इलेक्टर्स डिसाइड होते हैं, ठीक है, कि यहाँ से फॉर एग्जांपल से इन अ पर्टिकुलर स्टेट देयर आर 30 इलेक्टर्स, इन अ पर्टिकुलर स्टेट देयर कुड बी 20 इलेक्टर्स आल्सो, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ इलेक्टर्स डिसाइड होते हैं, और जो स्टेट के लोग होते हैं वो उन पर्टिकुलर इलेक्टर्स के लिए वोट करते हैं। सो देयर आर टोटली 538 इलेक्टर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सारे स्टेट्स के मिला के, ठीक है। अभी फाइनली जब इलेक्टर्स इलेक्ट हो जाते हैं, ओके, सो दे फॉर्म एन इलेक्टरल कॉलेज, ठीक है। इसको जो इलेक्टर्स सारे मिलके जो होते हैं, दे आर कॉल्ड द इलेक्टरल कॉलेज। ये इलेक्टरल कॉलेज फाइनली वोट करता है कि कौन प्रेसिडेंट रहेगा और कौन वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। बेसिकली प्रेसिडेंट के लिए ही होता है वोट, तो जो प्रेसिडेंट बन जाते हैं उसी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। सो द मेजॉरिटी इज 270 इलेक्टोरल सीट्स आउट ऑफ 538, विच इज मोर देन 50%, राइट। सो जिसको 270 सीट्स मिल जाती है, दैट पर्सन बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Now, a peculiar thing about the elections in the United States of America is that even if a person gets majority vote, it is not compulsory कि वही इंसान president बनेगा। And why am I saying this is because it depends on the electorals. Generally electorals अपनी पार्टी से differ नहीं करते हैं, but फिर भी जो electorals हैं, they basically tell you कि कौन से state से किसको कितने वोट मिले, कितनी electoral seats मिली है, okay? It does not tell you कि कितने percentage votes किसको मिले। So obviously in fact in 2016 Donald Trump did not get the highest majority, it's just that कि उनके electoral ज़्यादा थे, उनके electors ज़्यादा थे जो कि जीत गए थे वहाँ पे, ठीक है। that is why he won the election in 2016. Now in 2020 also we know that United States has majorly two parties, which is the Republican Party and the Democratic Party. So the presidential candidate from the Republican Party is again Donald Trump. He is standing for his second term. The vice presidential candidate is Mike Pence, and from the Democratic Party the presidential candidate is Joe Biden, and the vice presidential candidate is Indian origin woman who is a natural born citizen of America, obviously Kamala Harris. Okay, so these are the candidates that are standing in 2020 elections. The results are finally announced in December sometime. Okay, so stay tuned for the elections. We'll discuss more on this topic. I hope you understood the basics of how elections take place in the United States of America and what are certain differences that they have with the Indian elections despite both being democratic countries. So that's it about the session from my side. If you like our sessions, subscribe to our channel and press the bell icon so you don't miss any updates from us.
keep following us on Instagram, because we'll be putting a lot of new updates on our Instagram page. You'll find the link to our Instagram ID in the description box. Make sure you follow us on Instagram also. All the very best.